positive psychology. So generally we frame items in positively worded item. Hardly we write negative items, negatively worded items. So what actually in such type of questionnaire, a person after reading or giving responses of 4 to 5 statement, he applies guess who technique. That is to say, give responses either on the strongly agree or agree item. Whereas all these three categories, that is strongly disagree, disagree, and uncertainty or neutral point is totally missing. So ultimately what happens that we get the totally skewed data. तो लोग लगाते ही नहीं टिक, they don't, no matter whether their behavior is representing to great extent to that particular phenomena, but hardly they bothered about it. तो कहते हैं गैसिंग में कि ऑप्टिमल मिड पॉइंट है बिटवीन परसेंटेज करेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन बाय गैसिंग and 100%. What is the optimal P for true false item? What is the optimal for 5 answer multiple choice question? So that's why true and false items or yes and no item response categories we discourage to for developing a particular test, because there is no such thing like a absence or presence. Okay, one particular person may be sociable in one situation. There is a possibility that the same person may not be sociable to another situation, particularly when he is attending funeral procession or something like that. He may not be sociable to that particular person. So in such cases, item buys for which equally able person, different cultural groups have different probabilities of success. तो कहते हैं कि डिफरेंसेस नहीं हो सकता है कि देयर मे बी नॉट टू मच डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ आइटम डिफ़िकल्टी लेवल, आइटम डिस्क्रिमिनेशन और समथिंग लाइक दैट. कि जैसे से फॉर एग्जांपल्स देयर आर सर्टेन आइटम्स लाइक से आई फील एंक्शस, आई फील नर्वस. तो सच टाइप ऑफ आइटम 3 words 4 words items, क्योंकि आइटम पर्टिकुलरली while writing the items, also the items should not be complex. It should not be double worded. They should be more clear and precise in nature. So of course, the test items also must provide in terms of the differentiation of that particular test. तो कहते हैं कि तो आइटम एनालिसिस जो है इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट बाय लुकिंग एट इंडिविजुअल आइटम और क्वेश्चन डिटरमिनिंग इफ दे आर साउंड और नॉट. बट इन फैक्टर एनालिसिस, तो नाउ आई एम एज आई टोल्ड यू आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट योर अटेंशन ऑन फैक्टर एनालिसिस. फैक्टर एनालिसिस में क्या, वेयर द प्रोसीजर इज द सेम, दैट इज टू से डेटा कलेक्शन, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग. बट now we are using exploratory factor analysis in order to extract or identify, that is to say how many items, how many factors are representing to a particular construct. Say for example, suppose the test consisted of or contains 50 items. So since the majority of the test or constructs are multidimensional in nature, so there may be a representation of 4 item, 5 item or something like that. But sometimes we apply, say for example, confirmatory factor analysis also. Say for example, like recently I developed a particular tool for the assessment of spirituality in practice. So all the practices which are being performed by the Hindus, so I put like S stand for this you may say P for प्रार्थना और S for क्या कहलाता है ये आपके रिचुअल्स, I for stand ईश्वर परिनादन, and R for ragas, T for turya, that is the higher state of consciousness,
and फिर SPIRI, TU for you may say one word which is equivalent to gymnastics कहलाता है आपका. तो that is also like उपवास. उपवास means fasting. तो like that 12 letters, the word spirituality consisted of 12 letters. So when I applied confirmatory factor analysis, so basically before that we have framed items and every item is being judged by the judges also. So and the last Y stands for yoga. So what I found that when I applied factor analysis, instead of getting 12 factors, we found 20 factors. 20 निकले, 20 factors we found. So definitely it was a difficult task for me to write the operational definitions of those terms because some of the items were overlapping to each other. समझे कि बहुत सी लोग थी. तो in that case, so in majority of the statistical procedure, it is found that the confirmatory factor analysis, which is the recent development in this field, but this is not necessary that you will get the same factor what you have coined. So that's why exploratory factor analysis we apply in order to extract, in order to identify the number of the factors which are representing to different you may say particular construct. तो वो नहीं मिलता है. अब now after that, now when you get 4 or 5 factors and you decide, so generally it is being highlighted that if the size of the sample is more than 400, you are supposed to retain only those items whose factor loading is 0.30. But anyhow, it also depends on you. Suppose if you are not interested in retaining more than 20 or 25 items out of 50, then you may increase, not through any manipulation. You may increase, that is to say, set the criteria like 0.40. If any items whose factor loading is above 0.40, then you can retain it, or 0.50 depending on you. Yeah. If the size of the sample is less than 400 or 300 like that, then in that case, I mean the factor loading should be 0.50. तो उससे आप क्या करते हैं? You extract certain factor and found that and operationalize those factors. So after getting it, finalizing, and the scree plot test, where you notice that certain changes in terms of representing to that particular factor, that is also important. 4 or 5 आपने, how you decide that 4 factors are important or the 5 factors are important. It totally depends on you. On the scree plot test also. Then you give the operational definition. After that, interfactorial, whether those factors which you have found on the basis after applying factor analysis, 4 or 5 factors, whether those factors are interrelated to each other or not. It means interfactorial validity also is to be established. That is the total number of items scored on a particular test must be positively correlated with factor 2, factor 3, factor 4. There should be positive correlation between the scores obtained on item factor 1 with factor 2, factor 3, factor 4, factor 2 with factor 3 and factor 3 with factor 4. So this procedure you can determine the interfactorial validity or the factor validity also. You may determine. अब reliability का बता दें. तो कहते reliability refers to the consistency of test score. वहाँ आपको बताया गया था.
So when the test is administered on the same sample or more than one with a reasonable gap of time, a reasonable reliability test will yield some scores. It means the test is trustworthy. So of course, if you are applying the test retest reliability method, that is the same test is being administered, re-administered to the same individual, then definitely the scores would be less. So when the, as I told you, the time interval increases between the first administration to the second test administration, the reliability coefficient decreases. जितना करीब होगा, आज आपने एडमिनिस्टर किया, सपोज इफ यू री-एडमिनिस्टर्ड द सेम टेस्ट आफ्टर 1 वीक, योर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट वुड बी हाई, तब आपका हाई होगा. अब ये टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी मैंने लिखा. क्या देता है? स्टेबिलिटी एक्यूरेसी देता है, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है, पैरेलल फॉर्म है, इंटर आइटम है, इंटर रेटर है, और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. समझ? तो दीज आर द सर्टेन डिफरेंट फॉर्म. तो अब इसमें क्या, जैसे टेस्ट रिटेस्ट हमने बताया कि वन ए टेस्ट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड ट्वाइस द सेम सब्जेक्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर सर्टेन टाइम लिमिट. फिर क्या पैरेलल फॉर्म में है, क्या है? द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑब्टेन्ड बाय टू कंपेरेबल सेट्स ऑफ मेजर. तो देखिए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिलेक्ट two tests, psychological tests meant for measuring the same thing. Parallel, it is difficult because one test may contain 30 items, the another test is meant for measuring the same thing but may contain 20 items. One test may have only 4 response categories, always, often, sometimes, never, whereas the another test may contain 5 response categories. So in physical measurement it is easy. Like 2 weighing machine you can test, 2 thermometer you can use. But in psychological test, this is not widely used. फिर कहते हैं इंटर आपके आइटम कॉरलेशन कहते हैं टेस्ट कंसिस्टेंसी रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्सेज ऑल आइटम्स इन ए मेजर. क्रॉनबेक अल्फा जैसे हम लोगों का कि भाई आपकी एक ही टेस्ट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड ओनली वन टाइम and every item is being treated as a psychological test. So in Cronbach alpha, inter-item correlations are determined for it. So always Cronbach alpha is always found high as compared to other tests, other types of reliability. ज़्यादातर में हाई मिलेगी आपको. तो इसके लिए भी है कि there are also one reference which needs if the test result is found, if the reliability coefficient is found more than 0.90, then it is an excellent reliability. तो इसका भी you have to quote the certain reference of it, कि which particular reference tell us. But generally we should use those psychological tests whose obtained reliability or reliability coefficient is more than 0.80. उनको यूज़ किया है. Whereas in the case of aptitude test, ठीक है, generally the reliability value is found low as compared to personality test. So this is also there. And inter-rater reliability, as I told you, like in the case of content, determining the content validity, that how many people give responses to that, that is also measures. फिर split half reliability, test is being administered only on one occasion, but the scores obtained on a psychological test is being divided into 2 equal halves, or on the basis of scores obtained as an odd and even method. ये मैं कहता हूँ. तो these are the 5 different ways for determining. अब ये थोड़े से वो भी बताया कि अब जैसे like improving parallel form, I also give suggestion how to improve inter-rater reliability or something. How you increase the reliability of your assessment. तो कहते हैं use enough questions to assess competence level. As much as questions you can frame, you can use it. But in the discipline like a positive psychology, you will find a number of measures which contains only 10 items, 8 items, 12 items.
But when we administered those tests to the Indian sample, we found less reliability coefficient based on it. तो कहते हैं have a consistent environment for participant. यानी कि the same test is, suppose if you are going to determine the split half method, no sorry, test retest method, the environment, you have to control your environment. That is to say, the same environment, classroom situation, suppose if you have administered a test earlier, another, when you retest it, the same situation, same subjects, you have to administer the same test. ये नहीं कि आप parallel ले लें, nothing like this. So definitely there is a chance of reducing the size of the sample when you re-administer the same situation test on test. कहते हैं ensure participants are familiar with the assessment user interface. क्या आप ये देख लो कि questions types and how they may not show their true competence due to unfamiliarity. So you need not to force them to, I mean you may say, give an answer of those questions. कि ये देख लिए भाई, जैसे ये है कि जैसे भाई कोई प्रेयर नहीं कर रहा, बट यू आर फोर्सिंग यू डू प्रेयर because it is one of the sunnah. So there is a possibility that it may have a reversive effect on him. तो यहाँ पे भी है, तो it means in such cases faith is matters more. So here also, if a person is unfamiliar with those tasks, he may refuse frankly, okay, sorry, I am not feeling comfortable to give you a response. Otherwise, if the questionnaires, if when you collect and you get it is incomplete, so in that case also you can, I mean, you need not to consider that particular questionnaire for the purpose of the final test. उसमें ज़रूरी नहीं आप करो. If using human daters, train them well. If you are using human daters for grading essays in observational assessment that check practical skills, make sure to define your scoring rules that clearly as well objectivity as possible. यानी कि suppose when the supervisor asks to the student, okay, you go and collect the data. So in that case, first, this is your responsibility as an investigator to read and understand the nature of the items. So when you administer, if any respondents intends to seek your interpretation or the meaning of a particular word or something, then you must be able to explain it more clearly terms. तो हम लोग यही करते हैं, तो basically majority of us are in a hurry to collect the material related to psychological test or any psychological test. After that we start collecting data randomly, no matter whether it is to be administered individually or a small group or other. So in that respect also the trainer or the supervisor should also explain the utility or the usefulness or the practicability of a particular psychological test, how these psychological test responses are important for you. So that really matters. So similarly, conduct regular item analysis to weed out ambiguous or poor performance question. क्योंकि बहुत से ऐसे भी होते हैं, there are certain psychological tests which cannot, personality test of course you can develop, frankly speaking, within 1 or 2 years. But with regard to aptitude test, interest test, or the speed accuracy test, which is called, so they may require 4 to 5 years also. Because sometimes you may are expected to add certain items or delete certain items from that, if it is affecting on your norms or if it is affecting on your the kind of the data which you intends to get. जो आपका पर्पस है वही हो सकता है, देयर इज अ चांसेस इट मे डिफीट योर पर्पस. तो इन दैट केसेस, तो आपने बाहर से देखे होंगे, particularly most of the western countries, if you read the manual you will find 40 to 50 pages manual. हम लोगों का क्या होता है, generally we prefer to write only 4 to 5 pages, nothing, we don't write anything, very few. So but anyhow, for the last so many years, myself and Dr. Professor Khan Saab, we have started writing
manual particularly I used to write minimum 10 to 15 pages. Everything, every concept is explained, and every operational definitions are also given. If we found certain relevant material resources related to review studies also, then we are prefer to mention those studies also in detail about it. So that is it means whenever it is in the form of publication, when you feel that this is to be sent for publication, so in that case definitely it should be more specific and detailed questionnaire. फिर कहते हैं item analysis is an automated way of flagging weak questions for review improvement. If questions are developed through sound procedure, so crafted and non-ambiguously worded, they are more likely to discriminate well, so to contribute a reliability test. So running regular item test is the best way to poorly performing questions. तो हम लोगों का क्या होता है, being an Indian, when we develop any psychological test, we develop only first time. Hardly we prefer to revise. One test we did in the year 2011 or 12, we have developed a spiritual personality inventory. So what we found that I think not only factor analysis, only two factors represented. That is, one is referring to virtuous qualities and another was moral rectitude. So then we did the close scrutiny that this item needs to be added, or there is a need for revisiting the psychometric characteristic of this fat. So when we collect another set of data, so we found 5 factors of that particular construct. So it depends also the awareness or the consciousness among the pupil or the respondent, how they viewed or perceived a particular item, and how they found that this item relates with their personality traits or the characteristic. It also depends. So that's why. So but generally we don't revise it. And moreover, a person who uses a particular psychological test, hardly he or she prefers to adopt into the conditions, to the sample under study. So always remember, norms must represent to the population under study. Norms must be current and represent to the population under study. Then it is good. So factors influencing reliability, intrinsic factors. That is those factors with the test itself which affect the reliability. यानी कि क्या है, length of the test. As I told you that recently we have developed test which is in the process, that is a Islamic parenting style questionnaire. So it contains 100 items. So we have prepared items based on the literature available and what are the practices which the Muslim parents generally follow in order to do the proper Islamic parenting style in relation to rearing to their children. We follow. But we are very much worried about it, that is as to whether we would get the good results or not. So for that matter, definitely content validity process is required. So कहते हैं the number of items a test should be lengthened to get a desirable level of reliability is given by the formula. तो अब कहते हैं homogeneity of items देखिए, difficulty value of items देखिए, discriminative value देखिए items. कि ऐसा तो नहीं कि all items may be of the same nature, same quality. Sometimes it happens. Like particularly the dimension like a health है. अब देखिए health क्या? Health may be WHO talks about only 4 types of health. Physical health, mental health, और हाँ spiritual और इमोशनल भी उनके नहीं, WHO में नहीं, environmental की अब बात करने लगे. But तो I added 5 more dimensions. Economic health, societal health,
organizational health, vocational health. So what I found that 10 different types of health is there. So respondents belonging or hailing from the different disciplines, they perceive the different types of health in a different perspective. So it is not, but earlier when I defined it as an acronym, so I found that physical health is an interaction, or health is an interaction of physical and psychological factors with reference to maintenance of health. अब वो कैसे मिला हमें? Hobbies. H stands for hobbies, E for exercise, A for aerobics. These are the physical factors. Psychological, lifestyle, thinking and happiness. So I found the collaborative evidence related to it. So this definition was confined to health is an integration of physical and psychological factor. But some people, they viewed health as it is an strengthening of body is required for the maintenance of physical health. Emotional health is different. That is how you express your positive emotions in an appropriate manner. So sometimes some people, say for example, like in the case of, if you observe the behavior of the people belonging to African countries, so aggression is a positive emotion for them. When they express or they talk to each other, they always talk aggressively. हमारे क्या है? Affiliation is the positive motivation. So cultural variations are also there in terms of defining or understanding the concept. तो कहते हैं कि discriminative values देखिए in terms of reliability or in terms of total correlation is whether high or not or something like that is more important. Test instructions also matters. तो उसमें क्या होता है? Particularly in objective test like a paper pencil test, the instructions are standardized because the instructions are printed on the top of the questionnaires. Whereas when we administered the projective test, in the manual instructions are required, but hardly we consult manual while we administer a test. So there may be a variation in terms of test administration. तो वहाँ पे उतनी objectivity नहीं होगी because the instructions are either semi-structured or totally unstructured. क्यों हमने तो बस आपको एक just for few seconds I would show you a particular picture like TAT, thematic perception. Okay, you need, now you consider such and such questions and now you write down the story based on this particular picture within 4 minutes time. What is happening, what led up to this situation and so on. कि 4 मिनट के अंदर आप कहानी लिख दो. तो scoring is also not objective because where we do not assign numbers 4, 3, 2, 1. If you put a tick mark on the strongly agree column, you will get 5. If you put a tick mark on the agree column, you would receive 0. 3 neutral or undecided. We don't, assign such number or thing like in projective test. तो वो उतने standardized नहीं. तो कहते test instructions more. Item selection. If there are too many independent items in a test, the reliability is found to low. जब एक से ही 2-3 item निकलें, तो ठीक है. Through factor analysis, sometimes such type of items are already deleted. If there are certain overlapping items are there. So, but anyhow, before administering or before finalizing the items, we must consider it. So reliability of the scores influences reliability. If a test, if a person is moody, fluctuating type, the scores will vary from one situation to another. Mistake in him give rise to mistake in the score and thus leads to reliability. कि डिपेंडिंग ऑन जैसे मतलब हैप्पीनेस का मेज़र है या हम लोग अक्सर होता है मेजॉरिटी ऑफ अस समटाइम्स कार्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो नाउ
the question arises, what aspect you intends to measure about the quality of life, whether subjective well-being or life satisfaction or happiness. There are some indicators related to it. What aspect you intends to measure? So of course, even though we know that the separate measures are available before us for measuring these aspects, but sometimes we are more interested in assessing the global aspect of health, that is the quality of life. तो extrinsic factors कहते हैं कि extrinsic factors like group variability. So when the group pupils tested is homogeneous in ability, the reliability of the score test is likely to be lowered and vice versa. कि ग्रुप में भी है कि ग्रुप जो है आप कर रहे हैं लाइक से फॉर एग्जांपल लाइक मुस्लिम्स और हिंदूज, बट सपोज व्हेन द मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी इन इंडिया, तो इफ दे आर लिविंग इन मेजॉरिटी in a particular group, in a particular place, their way of response would be totally different. When they are living in minority with the majority community, their responses would be different. Suppose if there is a construct like a feeling of security, insecurity, so majority people may also feel insecure when they live with the minority community, with minority, with lower in number. But the minority community people may feel more secure when they live in majority in a particular place. So there is also, so depend on the type of the construct, what you expect from the sponsor, that also matter. Guessing and chance error कहते हैं. Guessing in test gives rise to increased error variance and such reduces reliability. For example, 2 alternative response option, there is a 50% chance of answering the items correctly in terms of guessing. कुछ लोगों में they would put a tick mark on the yes column, some people may tick mark on the no column. तो 50% reliability है, probability है of getting response in terms of the yes responses and 50% of that. But in the case of 5-point rating scale, guessing is also there, but not to a greater extent as compared to when there is a 2 alternative response category. गैस यहाँ पे भी मैंने बताया ना कि अब जो क्या है, लोग पॉजिटिवली वर्डेड आइटम बनाने लगे, पॉजिटिव क्योंकि कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट्स जो है लाइक होप की फीलिंग ऑफ होप है, ऑप्टिमिज्म है, हैप्पीनेस है, दे आर मोर एज कम्पेयर टू द निगेटिव चीज़ों में. तो पहले था अर्लियर जनरली वी प्रेफर टू राइट few negative as well as few positive items. But in terms of the negative items, if the construct is measuring something positive, the scoring becomes reverse. तो अब कहते हैं नहीं भाई वो करो, तो sometimes the bias is also from our end. Okay, that is what we intends to measure and what we expect in terms of the response. That also. तो कहते हैं environmental conditions, practicable testing, environment should be uniform, agreement should be that light, sound and other comforts should be equal to testy, otherwise it will affect the reliability of test score. अब जब हम लोगों के यहाँ when the first psychological test was start in Egypt, the test was known as Thanaviya Amma. तो क्या होता, announcement हो जाता था पहले से कि such and such time the psychological test will be administered to such and such people. Even honking a car horn, a person is expected to pay penalty. कार का हॉर्न भी नहीं बजा सकते हो ये. तो इस तरह हम लोगों का भी होता है, अटेंशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं. व्हेन वी यूज टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी. Of course, the experiment should be conducted in the 4-wall room situation and control each and every aspect. तो कहते हैं controlling of environmental conditions is more important, but it is very difficult. Sometimes it is very difficult for us to
do the proper testing. So that's why we don't get proper results also. तो कहते हैं मोमेंट्री फ्लक्चुएशन में राइज लोअर द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट लाइक क्या है, पेंसिल टूट गई आपकी है, और क्या हुआ, मोमेंट्री डिस्ट्रक्शन बाय सडन साउंड ऑफ ए ट्रेन रनिंग आउटसाइड, एंजाइटी रिगार्डिंग नॉन completion of homework, making in giving the answer and knowing no way change are the factors which may affect the reliability of test score. शोरगुल बहुत हो रहा है, so people may sometime disturb about it, or may ask you answer, okay, tell me which particular answer or the alternative you are going to put a tick mark on of this such and such question. Particularly it happens in the case of इंटेलिजेंस टेस्टिंग, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, पूछने लगते हैं एक दूसरे से कि भाई बताओ कि क्या, तो इन दैट कंडीशन फिर अब आता है वैलिडिटी. तो कहते हैं हमने आपको वैलिडिटी रिफर्स टू व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर और हाउ यूजफुल द टेस्ट इज. तो कहा कि रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी. वैलिडिटी बहुत ज़रूरी है. इसलिए आपने देखा होगा इन टर्म आफ्टर प्लानिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वी आल्सो प्रेफर टू एडमिनिस्टर डिटरमिन द कंटेंट वैलिडिटी ऑफ टेस्ट. दैट इज द जज बेसिकली एजुकेट और इवेल्युएट द नेचर ऑफ द आइटम्स. So it is the most important issue in selecting a test, what the characteristic of test measure and how well the test measure that particular characteristic. तो इसलिए क्या करते हैं, कभी कभी होता है, समटाइम इट आल्सो हैपन, बहुत से लोग आते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट से भी आते हैं, कहते हैं साहब ये टेस्ट एक बनाया, वी हैव कंस्ट्रक्टेड वन पर्टिकुलर टेस्ट, सर्टेन टेस्ट आइटम रिप्रेजेंटिंग टू इंटेलिजेंस और सच एंड सच पर्सनालिटी टेस्ट. तो हम भी कहते हैं अच्छा ठीक है, वी educate or judge the nature of the item in terms of relevance, clarity or ambiguity. Before, I mean you may say, judging these items of a particular test, always ask to the respondent to tell me how you operationalize the concept. Operational definition बताओ. Because the conceptual definitions may be so many definition मिलेंगे, इंटेलिजेंस की है तमाम definition मिलेंगे, पता नहीं ये कहा ये कहा, but how you conceptualize definition, that matters. यानी कि operational definition matters rather than to this conceptual. So it means whenever you write the thesis also or doing some work on a particular construct or on a particular measure, so always consider that the test, there should be a conceptual definition as well as the operational definition. Operational definition किसकी होगी? Those person who intends to develop his own psychological test. क्योंकि एक ही नाम के तमाम आते हैं, बहुत से आते हैं. You will find a number of psychological tests meant for measuring the happiness, subjective well-being, or so, like that. So it is more important. अब देखिए कंटेंट वैलिडिटी का फेस वैलिडिटी भी कहलाती थी. तो उसमें क्या क्या है, पहले तो ये करते थे, वी अप्लाई द CVI, कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स. व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट एट दैट टाइम देयर वाज नो सच थिंग लाइक दैट. वी प्रेफर टू डिटरमिन द फेस वैलिडिटी. तो उसमें क्या कहते हैं, दिखा देते थे, कहते थे नाउ यू जज द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टेस्ट आइटम. There was no such thing like a 4-point rating scale or nothing like that. Face value देख लो, सिस्टम कहते हैं. तो फिर कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी, एग्जामिन वेदर measurement scale performed as expected in relation to other variables such as meaningful criteria that is predicted, and actual behavior should be familiar with the addresses of that question. क्या आपको वैलिडिटी के whether anything it is predicting or not. कि जैसे अक्सर होता है, ये आपने देखा होगा, कहते हैं डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइड. तो बट नॉट इट, आई मीन यू मे से दिस हाइपोथेसिस मे नॉट बी यूनिवर्सल इन एनी केस.
कि डिप्रेशन में नॉट लीड टू सुसाइड. तो क्या होता है, तो ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्टिव वैल्यू you may say definitely it exists, this hypothesis exists. Those who are depressed, they may commit suicide, but what about those they may, that एक अभी केस था, अभी कुछ साल पहले की बात है, आई एम टेलिंग यू, डॉक्टर्स डेथ कहलाते थे यूके में. वन केस वाज रिपोर्टेड, डॉक्टर्स डेथ. तो कहता है ही बेसिकली दैट डॉक्टर वाज सैडिस्टिक इन नेचर. ही यूज्ड टू get more pleasure in inflicting injury to his patients. वो क्या कहता था, ड्रग के इंजेक्शन देता था, illicit drugs के यूज टू गिव इंजेक्शन. particularly most of the his clients were female victims. तो anyhow, तो one lady, she was 80 or 84 year old. तो when he gives him injection of heroin, so he says, why such type of symptoms is happening? It never happened, or I never felt such type of feeling. Then she made report to the, filed an FIR against doctor in UK. London में उसने FIR की उसको, and anyhow he was arrested and found the number of the cases, what he did, and sometime like. So in that case, a day before when he commits suicide, so psychologist came and psychologist made a prediction that he has no such tendency to commit a suicide, but he committed suicide. So psychologists are also liable to give the explanation. What basis you have made a prediction that this person will not commit a crime? So practicability or predictability. So because psychological test cannot be defined a measure of such, other than it also helps in identifying as well as predicting the behavior of an individual. इस तरह convergent validity extent to which scale correlates positively with others measure of the same construct. अब जैसे hope है, suppose if you want to, इसमें भी ये selection criteria is the most important. अब suppose if you have developed a test meant for measuring the hopefulness or hope, the other measures you can develop like a optimism or any attributional style scale for determining the convergent. It means the scores between the test which you have developed as well the test which are already developed, and measuring the positive aspect that must correlate positively with each other. तब तो आपका कन्वर्जेंट वैलिडिटी है. और डिस्क्रिमिनेंट में डज नॉट कॉरलेट विद अदर ईच अदर, निगेटिव कॉरलेशन आए आपको या नहीं आए, तो इट मीन्स देन वी कैन. तो आजकल जो है मोस्टली वी प्रेफर टू डिटरमाइन द कंटेंट वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट थ्रू CVI, कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स, and convergent validity, discriminant validity, or in the terms of the factor analysis, factorial validity. That is, all the factors derived from after applying the factor analysis must correlate with each other. Nomological validity, theoretical prediction measure different but related construct like in aging and memory. अब जैसे ये memory is no more confined to the past. अब आजकल हम लोग क्या करते हैं, we also talk about prospective memory. वो कैसे होता है कि particularly like in the case of aging patients, mainly aging patient or otherwise every type of patient, when the doctor prescribes certain medicine. So okay, you take this medicine in the morning, this to the afternoon, before meal or after meal, and this such and such medicine into the after meal or after dinner or before dinner, something. तो prospective memory वर्स जो फ्यूचर याद करते, पास नहीं कि हमें कौन सी दवा कब लेना है, दैट प्रिस्क्रिप्शन. तो अर्लियर हम लोग क्या था, लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते थे, शॉर्ट टर्म मेमोरी बात करते थे. तो अब कहते हैं कि नहीं, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी इन द केस ऑफ
health, medicine or something like prospective memory is more important. It is no more confined to the. तो ख़ास तौर से जैसे एजिंग के फिनोमेना में है prospective memory seems to be more prevalent as compared to the past memory. Past तो उनकी बहुत ही majority में until unless person suffer from dementia, that is loss of memory. Otherwise past तो बहुत अच्छा होता. They retain each and everything, particularly in our culture. हमारे यहाँ बाहर कंट्रीज़ का नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं है, particular because there is a less interaction among the people. तो वो लोग इतना नहीं जानते हैं. Validity is important because it can determine what types of tests to use to make sure researchers are using methods that are not only ethical and cost effective. अब आजकल हम लोग ethical considerations भी चलने लगे, समझे कि which test is to be used and how to administer it and whether permission is needed or required or not. Ethical considerations, particularly in the clinical cases में हम लोगों के तो अभी इतना नहीं यूनिवर्सिटीज़ में पॉपुलर हुआ, अदरवाइज ethical guidelines are available. You cannot publish any paper in the Scopus Index or Web of Science Journals if your topic or data is not being approved by the ethical committee. तो मेडिकल में तो होती है ethical committee and यूनानी मेडिसिन में भी है, but in every faculty it should be there. क्योंकि वो कहते हैं there is no conflict of interest among the participants and the investigator and everything is to be finalized. तो बाहर कंट्रीज़ में कुछ, इंडिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चल रही है, मतलब दे अप्लाई, अदरवाइज दे I mean the publishers of international journals or the editorial board generally ask this question. तो RAC वगैरह होती है, हम लोग रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है, but that is not equivalent to ethical committee. Ethical committees consists to be constituted separately, where they decide each and every parameter in terms of the cost and effective living, because the human is involved in conducting any particular psychological event. So at the cost of the unethicalness, I mean humans should not be lost. तो कहते हैं but truly measure ideas construct in question. अभी कहते हैं डिस्कशन में क्या, अब ये डिप्रेशन में जैसे वैलिडिटी के फटीग है, इंसोमनिया है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, सुसाइडल थॉट्स लाइक इन द केस ऑफ डिप्रेशन. तो अब क्या है, इफ देयर इज एन इफ द टॉपिक, बिकॉज समटाइम्स वी आल्सो फ्रेम रॉन्ग टॉपिक्स व्हेन वी कंडक्ट रिसर्च. और अब तो ठीक है, फॉर द लास्ट 10 years से we have a शोध गंगा में you will find the topics approved as well as the degrees awarded in the PhD thesis में जो है you will find. But nowadays I mean, it is more important. Earlier we don't have such, so there was a lot of repetition in that था. तो कहते हैं अब वैलिडिटी के लिए आप ये these are the certain parameters which can be taken into account, क्या आप कर सकते हो. फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंट, फैक्टर्स इन द टेस्ट इटसेल्फ, वो भी आपकी वैलिडिटी कर सकता है. तो मतलब आपको मैंने बताया ना कि जैसे सपोज इन द इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिस वी कंसीडर्ड ओनली 12 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. Accordingly, we have framed 10 items representing to each factor. But on the basis of the factor analysis, we found 20 items, 20 factors. तो कहते हैं number of factors also influence the test. तो functioning content and teaching procedure. हाँ, क्या आपने कैसे मतलब कोई भी मतलब how you train to your subject or the investigator, how to collect the data, that also influences.
तो कहते हैं फैक्टर्स इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग, वेदर डेटा इज टू बी कलेक्टेड इंडिविजुअली, स्मॉल ग्रुप्स और large group. Personality test can be administered into the large group. But if the test is of performance type, like an intelligence test or non-verbal type, it is to be administered either individually or in small groups. Otherwise, it will influence the validity. फिर फैक्टर्स इन पीपल्स रिस्पॉन्स. अब देखिए इन क्लिनिकल में क्या होता है सेटिंग में, when you administer a test to the any patient, mental patient, where we are not only interested in obtaining the scores obtained on a psychological test, rather your test taking attitude, how you view test and how you respond to that particular test. That is pupils response also matter. फिर नेचर ऑफ द ग्रुप एंड द क्राइटेरिया कि क्या है, आप विच पर्टिकुलर क्राइटेरिया यू फॉलोड फॉर द पर्पज ऑफ द डेटा कलेक्शन, क्या फॉलो किया आपने. फिर फैक्टर्स इन द टेस्ट इज ईच टेस्ट कंटेन्स आइटम्स एंड क्लोज स्क्रूटनी ऑफ टेस्ट आइटम्स विल इंडिकेट वेदर द टेस्ट अपीयर्स टू मेजर द सब्जेक्ट मैटर कंटेंट एंड द मेंटल फंक्शन ऑफ द टीचर विशेस टू टेस्ट. कभी कभी होता हमारे दिमाग में कुछ और है, we are interested in measuring something else, but the test what we have developed, it measures something else. जैसे मैंने बताया ना कि like a righteousness test when we developed, we have taken and we read the literature, righteousness in Hinduism, Buddhism, Christianity, Islam, Judaism, in most of the religious studies. Following that, we have framed certain items into that part. And we are expecting that we will get 4 or 5 different factors meant for measuring the righteousness. But when we apply exploratory factor analysis, we found only one factor, that is unitary test. So ठीक है, definitely it reduces our cost, that is in terms of our perseverance in terms of defining different factors or explaining or something like that. But anyhow, it was a matter of more frustration what you intends to measure and what you measure. That should not be right. तो कहते हैं the formula which determines the length of which test may be increased is to ये, इससे आप जो है 1 minus a number of items to the test to be lengthened, कितने आप 10 से 20 करना चाहते हैं और 10 to 15 करना चाहते हैं, that formula you can apply in order to lengthen the test, or they reduce the test, correlation of the test within criteria and validity of the test item. फिर कहते हैं unclear directions. If you have not given a clear direction, that is the instructions. If your instructions are not standardized or objective, then definitely it also permissible to you will not get the clear results what you intends to get. फिर कहते हैं reading vocabulary and sentence structure which are too difficult. Sometimes it also happens that the sentence is very lengthy, and sometimes the say for example one of my teacher, he used to write, sometime he used to write one particular sentence in say 80 words or 100 words, because he offered English and Urdu as one of the optional subject when he was a student. So when we sent one paper for publication in British Journal of Social Psychology, still I remember the name of the editor. तो she commented कि क्या इंडिया में भी लोग इतनी अच्छी इंग्लिश लिखते हैं? She commented like that. Because his grammar, and he was good in grammar and punctuation. So he used to write sentence. So sometime writing such kind of this sentences, you may say, which may contain like one paragraph or like that,
we fail to convey the message what we intend to do. कि क्या कहना चाहते हैं वो नहीं कभी क्यों हो पाता. So I have also started writing that, but my English was not so good. So one of my elder brother, he did masters in English, and one of my another teacher, he used to say, no, always split like simple sentences and clear. Don't write complex sentences. फिर एक टीचर मेरे आए and he said, whatever if any thoughts emerge in your mind with regard to research or anything, first you write down. Don't bother whether you are writing the sentence correctly or incorrectly. पहले लिख डालो. क्योंकि कहते थे, you used to say because the thoughts enters in your mind in your mother tongue, but you are writing English, which is not your mother tongue. पहले लिख लो, otherwise you will lose the sense. तो कहते हैं reading vocabulary and sentence structures which are also too difficult. नहीं होना चाहिए, समझे? The complicated vocabulary and sentence structure meant for the pupils taking the test may fail in measuring the aspect of pupil performance, thus lowering the validity. लोअर हो जाएगी आपकी जब आप इस कहते हैं. तो इसलिए पहले मैंने बताया ना, when this content validity procedure which is more prevalent, first we ask to the judges to read each item and said whether item is clear or not, or relevant or not. तो उसको आप पहले से दीजिए. You give him some operational definition, how you have defined or perceived this particular concept. That तो कहते हैं inappropriate level of difficulty and the test item. When the test items have an inappropriate level of difficulty, it will affect the validity of the tool. For example, criterion reference test, failure to match the difficulty specified for learning outcomes and lower the validity. कभी कभी होता आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव टेस्ट वगैरह में होता है, समटाइम 2 आंसर सीम्स टू बी राइट. अब ये टेस्ट डेवलपर और द टेस्ट राइटर थिंक इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन कहते हैं कि यस इट इज़ डिफिकल्ट. तो definitely it fulfills his desire that people, but anyhow, suppose if you asked his explanation of how these items, 2 items which are 2 responses are different in terms of, then it is difficult. तो अब आजकल क्या है, sometimes in some of the western universities they ask the paper setter or the teacher to write your expected answer, what you expect from the students of answering such and such question. But in some cases, ठीक है, say for example mathematics, chemistry, physics, science subject, it is okay, but what about the behavioral social science? It is difficult. So I never submit my answer कि हमने भाई it is not an objective test. अच्छा, similarly like PPT, my son was studying at 4th class, so he was good in preparing PPT, but I do not prefer to do prepare. And that time in Malaysian University it was compulsory. तो हम कहते तो I used to defend myself. First you tell me, okay, no problem, I will explore. Where is interaction between the student and the teacher in PPT? There is an interaction between you and PPT. There is an interaction between me and with PPT. What about your interaction with me? So I used to defend, and I never told them in the last 4 years I served there, I am not able to prepare the PPT. So I used to defend myself like that. I think majority of the students, they are more interested in getting PPT. अच्छा, अच्छा आप लोगों की तरह नहीं था. You are more expressive as compared to them. बाहर कंट्री में माफ़ करना भाई, हम लोग यहाँ जो लोग मेहनत के आदि हैं तो they get good score. वहाँ नहीं है कोई, मतलब nobody expect you to write answer of each every question 5 pages 6 pages or 1000 words or 1005. They expect only 1 paragraph.
sufficient for them. So that's why they. So sometimes they used to write two, but I never submit. I mean, no, how it is possible to write? But there is a possibility that the student may write good, more explanatory as compared to me. Let him write or something. So sometimes the length of the questions as well as the answer is also the same. बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने पड़ते थे लाइक काउंसलिंग में हमें क्लिनिकल में वी यूज टू राइट लाइक केसेस and expect from the student what type of psychotherapy or you will use or what would be the essential steps related to each and everything. तो यहाँ पे भी यही है कि भाई inappropriateness है sometimes it happens कि what you intends to measure, what you really measure, there should not be discrepancy. वही वाली बात है what actually you are and what you aspire to be. With the poorly constructed test item, the test item which provide unintentional cues to answer and to measure the pupil's alertness in detecting clues as well as aspects of the pupil performance which ultimately affect the validity. अब आजकल तो जैसे मैंने बताया ना कि प्लेजरिज्म चलने लगा, तो majority of us particularly are very much confused with this word. So the testing procedure check what we used, basically it informed us similarity index कि आपने कितना मटेरियल आपने लिफ्ट किया, कहाँ से किया, और आप you are quoting, giving the reference also and writing the inverted commas also. तो अब उसे कह देते हैं कि भाई ये तो प्लेजरिज्म नहीं, भाई वो सिमिलरिटी इंडेक्स है. प्लेजरिज्म में है कि इफ यू प्लेजराइज द मटेरियल बट यू डू नॉट कोट इट. तो अब क्यों हुआ भाई? बिकॉज आई एम फेसिंग सच टाइप ऑफ डिफिकल्टी पर्टिकुलरली व्हेन आई एम राइटिंग एंड कोटिंग द कुरानिक वर्सेस एंड हदीस. अब हम उसे तो नहीं बदल देंगे, वो तो वही रहेगा, सब चेंज रहेगा. अब वो सिमिलरिटी इंडेक्स देखता है, लेकिन वो जो पब्लिशर्स होते हैं दे हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट इट कि नहीं ये साबित हो. अरे भाई सिमिलरिटी इंडेक्स है, हम तो उस चीज़ को कोट कर रहे हैं, प्लेजरिज्म भी है, हम तो उसको कोट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट citing any reference to that, then it is called plagiarism if anybody report. तो हमने कहा such type of plagiarism report would also may get only from the alumni if he will submit any tender any application that this person has memorized such and such surah from such and such chapter of the Quran, then it is of course. So sometimes, I mean, you may say analyzing as well as writing the things in a more comprehensive and a more connected manner, that also needed. फिर कहते हैं poorly constructed test item, the test item which provide unintentional clues to the item and address and detecting clues as well as the aspect of the pupil perform which ultimately affect the validity. कि भाई items ही अगर बेकार हैं या आप items is conveying and does not conveying anything or something like that, then definitely it affects. Ambiguity कहते हैं, ambiguity in statement of the test items tends to misinterpretation, differing interpretation and confusion. तो ambiguity में भी बहुत से लोग होता है, sometimes कहते हैं कि it may confuse the better students more than the poorer ones. कि बहुत ज़्यादा, अब जैसे ये होता था कि भाई जब हमें याद है कि when I was member of the academic council, तो one vice chancellor he conveyed that the students of social sciences are far better as compared to the engineering students. क्योंकि on an average ये निकाला गया कि students they forced each other instead of writing the answer of all question, better you stick to write the answer of only 3 questions. Otherwise, the CG group ranking would affect. You, as an individual, you can attain high rank, good marks, but individual it would affect. तो वो लोगों का 18% था और हम लोगों का 33% पासिंग था. तो
तो भी कहते कहते बहुत अनक्लियर टाइप के होते हैं सब टाइम्स। ये जितना भी रैंकिंग का सिस्टम है, ग्रुप का है, ये इट आल्सो अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस। तो सिमिलरली रैंकिंग ऑफ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, आर्ट्स, यू कैन नॉट मेक कंपेरिजन फ्रॉम द साइंस। अच्छा, उनकी लैंग्वेज है, दे हैव लिमिटेड नॉलेज एज वेल, लिमिटेड लैंग्वेज आल्सो उनका जो है, एज फार एज कंपेयर टू अस। आपको तो डिस्कशन में यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट in detail following your socio-cultural milieu. They are not expected. They are expected to apply those formula or something. So they prefer to write only, say for example, 3 pages or 4 pages article. हम लोग 10 pages minimum. Sometime it may be more than 20 pages also. Also writing about it. We कहते हैं test items inappropriate for the outcomes being measured. Many items what we try to measure certain complex test of achievement, understanding, thinking, skill. The test items are appropriate only for measuring factual knowledge. वही बता रहे हैं, तो उससे achievement नहीं है। अब जैसे यही है, scholastic achievement is more misleading, है ही नहीं है? The number of percentage of marks what you get and the job you get. तो ये कोई मतलब प्रेडिक्टिव वैलिडिटी नहीं हो सकती कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन प्रेडिक्ट ए पर्सन हु स्कोर्ड 90%, 80% above mark, he will get 100% job. Nothing like that. तो कहते हैं ये इट इज एन इनअप्रोप्रिएट बट द नॉलेज व्हाट यू हैव गेन दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट इनटू दैट एस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट. अच्छा, sometimes some students, for example, I am telling you, I never prefer to consult books which have been prescribed by the teacher or written in the syllabus. मैं कभी वही नहीं पढ़ता किताबें लिखते ही, तो always consult to the general section, वहाँ चले जाते थे. And फिर अब क्या है, majority of us expect to write what he taught you in the class. तो उन्हें भी नहीं परेशानी होना ना कि वो जब उसे फिर पढ़ना पड़ेगा ना कि ये क्या लिखने जा रहा है या क्या लिख रहा है, तो नहीं लिखता. बट एनी हाउ दिस वाज आल्सो नॉट माय विश टू टॉप इन द क्लास, बट ठीक है, फर्स्ट डिवीजन आ जाए इट इज ओके फॉर मी. बट एनी हाउ आई हैव टू रीड और राइट समथिंग एल्स व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लासरूम. तो कहते हैं improper arrangement of items. Items in the test are generally arranged in order of difficulty with the easiest item first. नहीं, लॉटरी सिस्टम निकाल लो, 50 आइटम है, राइट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर 1 2 3 4. आपने आइटम लिख दिया, आइटम 1, अब आइटम 1 उठा लो, 2 3 4. दिस प्रोसीजर इज ओके, देन यू कैन रैंडमाइज इट. अब नहीं, अब डोंट राइट द आइटम्स इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल. फर्स्ट यू राइट द इजीएस्ट आइटम, then second item, like that. जैसे competitive examination में क्या होता है, if a person is good in a particular subject, first he made an attempt to solve that. कहीं एक आध क्वेश्चन है फंस गया, उसे मालूम है कि इज गुड, फंस गया तो मार पड़ेगी में वेस्ट हिज टाइम. he does not know how to limit his time in solve or assign time particular solving such type of question. तो कहते हैं आइटम्स इन द टेस्ट आर जो है इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए. आइडेंटिफाइबल पैटर्न्स ऑफ आंसर. व्हेन द स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ आइटम लाइक ABCD, दे कैन क्लियरली गेस द आंसर एंड दिस विल अफेक्ट द वैलिडिटी. बहुत से लोग आप देखिए, कुछ लोग होते हैं दे सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन. अब उन्हें मालूम है मिनिमम 25 to 35 to 40% होगा आंसर सही. और जहाँ वो नहीं है, जैसे MBBS टेस्ट वगैरह में नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करके मार देते हैं, निकाल पाए, तो बहुत उतना हाई परसेंटेज नहीं जाता. आजकल जैसे भाई इंजीनियरिंग वगैरह में देखिए बहुत लो मार्क्स में, आप उतने मार्क्स में सोशल साइंस में नहीं क्वालिफाई कर सकते, आर्ट्स में नहीं कर सकते. वहाँ 20-25 नंबर वाला भी है जिसके 150 में आ जा रहे हैं, वो भी इंजीनियरिंग में क्वालिफाई कर जा रहा है.
आप बहुत से देखिए कि कंपटीशन के चक्कर में इधर भी एडमिशन ले लेते हैं, बीए में ले लिया, इसमें ले लिया, एंड आफ्टर दैट देयर मेन एम इज़ टू क्वालिफाई दैट पर्टिकुलर टेस्ट। वो सोचते हैं चलो ये ठीक है, इट इज़ गुड आर्ट, तो कहते हैं इट इज़ आल्सो एन आर्ट और स्किल। कुछ स्टूडेंट समटाइम्स यू विल फाइंड that they are very good, they are very expressive, but it is very difficult for them to qualify any test. So I am telling you one example. एक स्टूडेंट था, he qualify almost every preliminary exam, even the IS examination he also qualify. कोई एमए नहीं कर पाता था, पहले उसने हिस्ट्री में लिया, he failed there, फिर साइकोलॉजी में आया, नहीं, फिर MSW में आया, तो आई वॉज सिटिंग इन द बोर्ड। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी, तो देन आई एक्सप्लेन पर्सन, ही वॉज द डीन, और थे हम लोग थे, हमने सर वी शुड प्रमोट हिम, ये क्या बात है इसके साथ है। तो देखा कि इन द ईयर 2002 व्हेन आई वाज विजिटिंग रांची मेंटल हॉस्पिटल, आई वेंट टू देयर हॉस्पिटल, देखा एक लड़का चला आ रहा है, कोट वाइट पहना है, तो फॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर इमेज आई थॉट कि दैट ही इज एन वार्ड बॉय। तो बुलाया, तो क्या कर रहे हो, सर चूँकि कंपटीशन क्वालिफाई कर जाता था, कि सर आई एम डूइंग PhD इन साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो फिर बोला कि सर वो बस उसी जगह से मेरी ज़िंदगी बन गई जब मैंने सोशल वर्क में MSW कर लिया। फिर देखा कि भाई एक जूनियर लड़की थी वहीं, उससे अच्छी शादी भी उसकी हो गई। फिर आया घर पे, कहने सर वो मैं यहाँ फलाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरा सिलेक्शन हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। तो फिर मुझे थोड़ा सा हुआ, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो फिर उसने कहा कि सर देखिए आपको मालूम है कि जो लोग दोज हू पास आउट फ्रॉम द रिन पास निमांस, जनरली अच्छे तो लोग टिकते नहीं, सब चले जाते हैं बाहर, समझे। तो आई अपीयर्ड बिफोर द इंटरव्यू, और ये वो अच्छा, अब वो वाइफ उसकी जो थी वो ज़्यादा होशियार थी, वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन हो गया, ये कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, समझे। तो वह कहने लगे सर वो मैं तो अपीयर हो गया इंटरव्यू, और हर बार एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आंसर मैंने दे दिए, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो समटाइम इट आल्सो रीइंफोर्सेस वंस बिहेवियर। तो वो कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट आपने ये किया कर, क्योंकि वो था वाइवा में आता था, तो अब ये होता था अरे सर वो प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसकी क्या नहीं चाहिए आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन थी, हिस्ट्री कोई सवाल पूछ लिए, अरे भाई साइकोलॉजी तो वाइवा देने आया, हिस्ट्री क्या क्या पूछ लेते तो वैसे ही रहा था। तो सोशल वर्क जब आ गया तो हम लोगों का भाई ठीक है चलो इसकी किस्मत, अभी इसने पता नहीं कितने सिक्योर कर लिए होंगे वहाँ पे मार्क्स रिटर्न में, तो यहाँ तो चलो इसको कर ही देते हैं, तो देखते हैं जो हो। तो कहते हैं कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि समटाइम आइडेंटिफाइबल पैटर्न्स ऑफ आंसर्स में नॉट बी अप्रोप्रिएट टू एनी पर्टिकुलर क्राइटेरिया, कि आपने क्या किया, व्हाट यू इंटेंड टू डू, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। When you exercise your potentialities or skills or given answer that particular matter, तो कहते हैं functioning content and teaching procedure that also matters, that how you train to a particular teacher on a particular direction. अब आजकल अभी जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हम लोगों में, बेसिकली एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि दैट आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी। तो माय मेन एम इज टू totally transform the perspective of the students of Islamic studies and come to the mainstream as a professional. So one international conference is going on in Arab countries. So he asked one question, how to train murabbi, sheikh, chaplains, counselor and studies of Islamic scholars. So here I got also success here in introducing 2 courses in Islamic department. That is one course is on Islamic counseling and another course on Islamic psychology. So training aspect, that is more important for them. So simply teaching at the theoretical level, the contribution of
Muslim scholars or philosophers or something like that. That is not enough in terms of imparting knowledge. That is not enough to read it. तो कहते हैं कि कंटेंट प्रोसीजर दैट मैटर्स. तो न्यू प्रोफेशंस आर इमर्जिंग. यू शुड वॉच आउट अबाउट इट. तो कहते हैं इन अचीवमेंट टेस्टिंग में फंक्शनिंग कंटेंट ऑफ टेस्ट आइटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड ओनली बाय एग्जामिनिंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द टीचर हैज़ टू टीच फुल्ली हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिफोर इंक्लूडिंग इट इन द टेस्ट. तो कुछ एक सेट ले लीजिए, सम पीपल randomly select few people and ask them how they solved the problem. फिर करो. अब हमने अब खराबी क्या है? When we develop a test, we apply our own intuitive knowledge in framing a test item. यहाँ तो है as a teacher, and these items are also being evaluated or judged by also the teacher. But we administer to the student sample or any other sample, then it is very difficult for us. It would be, there is a total exercise is futile about it. So in the achievement test, aptitude test, interest test, there should also be the participants' participation while finalizing the items. कि क्या उस लेवल के लोग कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये that matters. तो कहते हैं टेस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स सीम टू बी वैलिड इफ द टेस्ट आइटम्स फंक्शन आर इंटेंडेड. If the students have previously experience of the solution of the problems included in test, then such tests are no more valid instrument for measuring the complex mental process and thus affect the validity. कि अगर आपने कर लिया है सब कुछ तो अब आपने कर, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी. जैसे होता ना नेट एग्जामिनेशन, सम टाइम यू सेट ए गोल, अरे ठीक है सिक्योरिंग 50 मार्क्स इज ओके फॉर मी. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी व्हेन in your batch the number of the seats may be reduced, but at that time the benchmarking may be 55%, so you may lose your hope. Total defect. So factors in test administration and scoring. The test administration and scoring procedure may affect the validity from the. If the teacher made test factors like insufficient time to complete the test. बहुत से लोग हम लोग स्पीड एक्यूरेसी टेस्ट की एग्जाम्पल है क्लासरूम एग्जामिनेशन. आप लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं, स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं, अरे दी क्वेश्चन इज़ वेरी लेंदी, हाउ इज़ इट डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट. हाँ वो भी मत कीजिए. जैसे मेरा था, आई यूज सिंस आई वॉज वेरी आई मीन स्लो इन राइटिंग, तो आई यूज टू सिलेक्ट ओनली दोज क्वेश्चंस हुज responses are very limited. तो अल्टीमेटली आई डोंट गेट मोर नंबर. जो लोग पूरी कापी भर देते थे दे गेट मोर नंबर. यहाँ हमारे पास 3-4 पेज का आंसर लिख दिया तो बस यही हो रहा है भाई 65% आ जा रहे हैं, 62% आ जा रहे हैं. बट आई नेवर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ supervision, I never made an attempt. That is how to enhance and how to select the items, what kind of the responses are to be given. तो कहते हैं यहाँ पे ट्राई आउट सैम्पल ज़रूर लेना चाहिए, पायलट स्टडी जैसे कहते हैं ना हम लोग. तो सर लेकिन बट इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द आइटम कंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलरली अचीवमेंट टेस्ट और टेस्ट विच आर स्पीडेड इन नेचर, एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर होना चाहिए. दैट शुड बी माय item responses. So similarly in a standardized test, the lack of following standard directions, time limit and automatically help the student in scoring would tend to lower the validity. आप validity कम हो जाएगी. फिर factors जो होती हैं people's responses में, group criteria है, फिर relationship, कोई कहा था हमने आपसे scale can be reliable but not valid. In order for it to valid it must also be reliability. So reliability is a necessary but insufficient condition for validity. तो बहुत से आपको टेस्ट मिलेंगे. You will find a number of psychological tests published by different agencies. तो वो लिख देते हैं reliability in process, validity in process. आइटम लिखे वहाँ खरीद लाते हैं. तो डोंट परचेस सच टाइप ऑफ टेस्ट. हमें याद है अभी भी एक हमारे बहुत सीनियर साइकोलॉजिस्ट थे इंडिया के, तो उन्होंने कमेंट किया पब्लिकेशन वालों का, बात कोई पहले आगरा वगैरह से पब्लिश होता था,
तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पर पोस्ट कार्ड हुआ था आज से 40-45 साल पहले। तो उन्होंने कहा भाई पोस्ट कार्ड पे ये नहीं बताया कि किसको, कि भाई पोस्ट कार्ड पे लिख दो कि वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द इंटेलिजेंस ऑफ डंकी, तो उसके ऊपर भी तुम्हें आइटम आ जाएंगे लिख के कि डंकी की इंटेलिजेंस कैसे मेजर करो, और लिखा होगा रिलायबिलिटी वैलिडिटी इन प्रोसेस। क्योंकि 3-4 पेज के मैनुअल लिखते थे बस लोग, और वो वही मैंने हुआ था ना, कोई सिमिलरिटी इंडेक्स और ये सब कुछ नहीं था। दूसरों को जो भी वो डिफिनीशन लिखी एक आध पेज में ये सब लिखे, और दूसरे में इतने सैंपल का लिखा, कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन कोई नहीं, 3-4 पेज का बस टेस्ट कंस्ट्रक्शन हो जाता। तो दैट इज़ ऑनली नीडेड। अच्छा, अब यहाँ तक की बातें बहुत हो गई। अच्छा, अब नाउ यू कैन आस्क सर्टेन, इफ यू इंटेंड टू सीक सर्टेन क्लेरिफिकेशन, तो आप तो हमेशा ये ध्यान रखिए, particularly those who are pursuing PhD in the field of social sciences, behavioral sciences, at least they should develop minimum one test as a part of your thesis. इतना तो करिए ताकि वो आपका कंट्रीब्यूशन लेगा। इन द एंड ऑफ द लास्ट चैप्टर, conclusion, limitation, suggestions, you also write one paragraph on contribution of the study, क्या आपने किया, what you have contributed, that matters। समझे कि अब हमारे यहाँ तो मैंने बताया नहीं, लिटरेचर में तो होती है, सोशल साइंस में तो कोई करता नहीं डिलीट विलीट, मैं नहीं पहला आदमी हूँ जो ने की अभी तक, और किसी ने नहीं किया। तो मैं टॉपिक अपना किया, फिर देन आई प्रेफर टू राइट 2-3 चैप्टर्स। टॉपिक वाज ऑन एक्सप्लोरेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन साइकोलॉजी, फिर हेल्थ प्रैक्टिसेस में क्या ऐसा यूज़ हो, ऑर्गेनाइजेशंस में ये वो तमाम दुनिया जान सब चीज़ें लिखी। तो ये ज़रूर पैराग्राफ एक लिखिए आप में कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी ऐड कीजिए अपनी, जो नहीं लिखा जाता है कि आपके तो ये बंद कर दें, तो आपको वो दैट विल प्रोवाइड यू सर्टेन रिजल्ट्स इनटू दिस रिस्पेक्ट। तो और जब टेस्ट डेवलप करें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग आइटम एनालिसिस, बेटर यू प्रेफर फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस में एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस यूज़ करो, समझे। आइटम टेस्ट वगैरह लिखने बजाय, प्रोसीजर इज जनरली नई किताब में दिया जाता है, बट आई टोल्ड यू कि दैट ऑलवेज प्रेफर टू डिटरमिन द कंटेंट वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग इट, समझे, ताकि उससे आपके आइटम नंबर ऑफ आइटम्स में बी रिड्यूस्ड, as well as would provide you information that is in terms of how many items, because there is an option also whether the item needs revision or item is to be rejected, like such type of options are there. तो relevance और clarity ज़रूर measure कीजिए उस item का then you proceed further about it, समझ। तो ध्यान रखिए इस तरह से डिटर्मिन साइज है, आजकल इफेक्ट साइज भी हम लोग कहते हैं। कोई भी टेस्ट लगाइए, देखिए हाउ डस इट योर फाइंडिंग्स वुड प्रेडिक्ट फर्दर, कि स्मॉल इफेक्ट साइज है, मीडियम है और लार्ज इफेक्ट साइज है। कोई भी टेस्ट आप यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिकल, तो दैट इज़ आल्सो टू बी यूज्ड फॉर इट। तो बहुत ज़्यादा ही आजकल पर्टिकुलरली उसमें वो है। अच्छा, हम लोग कोई ज़्यादा हार्डली वी फॉलो सर्टेन मॉडल्स और थ्योरीज, उतनी वो नहीं करते, पढ़ लेते हैं एंड सम टाइम वी डिस्क्राइब सर्टेन, इफ़ यू कैन रिलेट दोस देन इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट रिलेटिंग टू इट। तो अब आप लोगों को कोई चीज़ें अगर क्लेरिफिकेशन हो तो आप पूछिए। नॉर्म्स मैंने बताया ना, परसेंटाइल नॉर्म्स हैं और स्टैंडर्ड। तो परसेंटाइल नॉर्म्स आर इजी टू इंटरप्रेट। उसमें क्या कि जैसे आपने सेट डेटा ले लिया, ठीक है, अब आपने क्या 10th परसेंटाइल निकालिए अपने टोटल ग्रुप डेटा, 25th निकालिए, 50th निकालिए, 75th और 90th, ये 5 लेवल रख लीजिए। अब जैसे सपोज हैप्पीनेस का आपने बनाया, तो अब those who would score above 90th percentile, they would be treated as highly happy individuals. So 10th percentile, 25th, 50th, 75th and 90th. तो ये ज़्यादा करते हैं। खान साहब ज़्यादातर जेड स्कोर भी करते हैं, बट जेड स्कोर से थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट होता है। जनरली परसेंटाइल नाम्स आर ईजी।
easy to interpret. तो उससे क्या होता है कि norms basically tell us or provide the information, the relative position of individual in comparison to group, कि आप कहाँ stand करते हो. अगर हाँ norms अगर नहीं available है, suppose if you have developed the test, you use the test developed by other person, and the norms are also वेरी ओल्ड, मैंने बताया ना 10 साल से ज़्यादा पुराने मत नॉर्म्स यूज़ करो, ऐसा टेस्ट मत यूज़ करो. तो ओके, you can use the same items and write down that all these items have been selected from such and such test, but you prepare your own norms, determine your reliability as well as validity. तो अभी भी इतने इथिकल कंसिडरेशंस हैं नहीं इंडिया में, मैंने बताया नहीं, अभी तो लोग बस थोड़ा सा कर ले रहे हैं इस चीज़ों का कि भाई करो, अदरवाइज इतने वो नहीं है. और ज़्यादातर लोग वही वेस्टर्न कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं के आइटम्स कर रहे हैं, उन्हीं की थ्योरीज कर रहे हैं. अपनी हार्डली वी गिव आवर ओन कंसेप्ट्स और द थ्योरीज रिलेटेड टू इट, वी डोंट गिव. हाँ भाई देखिए, सेमेंटिक डिफरेंशियल में आइटम्स आर फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, indicative adjectives and contraindicative adjectives, and the items response is like very close, close, slightly or neutral, and the responses ranged from 7 to 1. ठीक है. और लिकर्ट स्केल में क्या है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, समझे, और न्यूट्रल और डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री. तो ओरिजिनल में क्या है, 5 पॉइंट है, लेकिन आप इन ऑर्डर टू अवॉइड द न्यूट्रल, बहुत से लोग होते हैं कुछ नहीं होता, अरे सर अनडिसाइडेड में लगा दो, इवन दैट वी विल गेट 2-3 मार्क्स अनडिसाइडेड. तो आप उसके लिए बेटर यू राइट 6 पॉइंट स्केल, स्ट्रांगली एग्री, मॉडरेटली एग्री, स्लाइटली एग्री. फिर आपने उधर से लाना है स्ट्रांगली डिसएग्री, मॉडरेटली डिसएग्री और स्लाइटली डिसएग्री. तो इसमें वो न्यूट्रल वाला बात हट जाएगी. हाँ 7 भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, कोई वो नहीं. तो उसमें भी वो आपको वही डायमेंशन दे देना. लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो रिसर्चेज हुई हैं, एक बहुत बड़े आदमी रहे हमारे, एग्जामिनर भी थे, ही वाज प्रोफेसर इन IIM अहमदाबाद एंड IIT कानपुर. तो वो कहने लगे, उन्होंने काफ़ी काम किया, मेथोडोलॉजी में बहुत अच्छा थे, रामाधार सिंह. तो कहते हैं यहाँ 5 पॉइंट स्केल से ज़्यादा ऊपर वर्क आउट नहीं कर रहा है, यहाँ रिस्पॉन्सेस सही आते नहीं इंडिया में, समझे. तो अब हम लोग न्यूट्रल को हटाने की वजह से थोड़ा सा 6 पॉइंट की भी कुछ कैटेगरीज ली. और आइटम्स अभी भी थोड़े से मिक्स कीजिए आप. अगर 30, इफ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 30 आइटम स्केल, देयर शुड बी एटलीस्ट 10 नेगेटिवली वर्डेड आइटम्स एंड 20 पॉजिटिवली वर्डेड आइटम. भाई स्कोरिंग प्रोसीजर रिवर्स हो जाएगा. अगर आपने पॉजिटिवली लग दिया तो वहाँ सब गैस हू टेक्निक अप्लाई करेंगे, सभी सब इधर ही चले जाएंगे रिस्पॉन्सेस, सब स्ट्रांगली एग्री या एग्री में, स्लाइटली में भी नहीं देते हैं. अच्छा, फिर उसको एक एनालिसिस और दिमाग में आती है कभी कि आप उसमें ये भी देखिए कि कौन कौन से आइटम्स हैं वेयर ए पर्सन गिव इज रेटिंग ऑन स्ट्रांगली एग्री आइटम, कि 100 में से कितने लोग हैं जो स्ट्रांगली एग्री पे आइटम नंबर 1 पे रेट कर रहे हैं, कितने लोग वो हैं. तो वो एक एनालिसिस वो भी बहुत अच्छी हो सकती है आइटम वाइज. हम लोग तो आइटम के स्कोर ले लेते हैं, रिस्पॉन्स की कैटेगरी कभी रखिए कि देन यू सी और assess whether this discrepancy you get or result get, whether the item is difficulty level is low or high. इसको भी ऐसा भी assess कर सकते हैं. एक क्वेश्चन था कि जो टेस्ट यूज कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, उसमें हम कुछ आइटम्स या कंस्ट्रक्ट ऐड कर रहे हैं अपने लेवल, हाँ कर सकते हैं. तो उसको पूरा प्रोसेस वही है कि वी हैव टू गो थ्रू जजेस एंड हाँ बिल्कुल ऐड कर, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. उनके पुराने लोगों के भी आइटम ले सकते हैं. यू कैन सेलेक्ट द आइटम एंड यू कैन कोट ओके सच एंड सच आइटम. क्योंकि देखिए हमारे जितने टेस्ट आए, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट डेवलप्ड इवन अप टू टिल 1980s, they are mainly based on MMPI, clinical के जितने थे, Minnesota multiference, because original scale it comprised 550 items निकलते थे, समझे. तो अब कहाँ पे हो रही है आपके स्केल, नए जो आ रहे हैं वो नए डायमेंशंस आ रहे हैं, न्यू डिसिप्लिन्स में जो आ रहे हैं,
जैसे हमने आपको बताया पास्ट में, इस तरह हम इस्लामिक साइकोलॉजी को बना रहे हैं, तो हम क्या तकवा स्केल है, अब हमने कुरान की 3 डायमेंशन देख ली, फेथ इन अल्लाह, लव फॉर अल्लाह, फियर ऑफ अल्लाह, तो अब उससे डायमेंशन से आइटम बनाए, फितरा के इसी तरह बनाए, आइडियलिक पर्सनालिटी है, कभी नाम नहीं सुना होगा, जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, तो वर्ड ड्राइवर फिर उसको ऑपरेशनलाइज करना कंसेप्ट को, देन इट मैटर्स। अच्छा, और कोई अलग भी अगर है, चलो आप सपोज इफ यू आर गोइंग टू यूज़ द सेम, जैसे मैंने बताया, तो ऑफ कोर्स तो व्हेन यू विल अप्लाई फैक्टर एनालिसिस, देयर इज अ चांस आइदर द फैक्टर्स मे बी रिड्यूस और मे बी इंक्रीज्ड इन योर सैंपल। तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि भाई पहले ये फैक्टर हमने जब इसको रिविजिट की, तो यू वन कैन रिविजिट द साइकोमेट्रिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्केल, तो आपके रिलायबिलिटी भी, वैलिडिटी भी, सब चीज़ें, फिर पूरी प्रोसीजर चलना पड़ेगा। ये भी कर सकते हैं हाँ, जैसे तो वो एडाप्टेशन हो जाएगा आपका। हाँ, तो एडाप्टेशन में भी इन योर लैंग्वेज, हिंदी उर्दू किसी में भी कर सकते हैं, और मे बी since the test was constructed more than 10 to 15 years ago, then you are re-standardizing it. हाँ, तो कुछ ना कुछ ये चीज़ वैसे रखिए, सच वो कर लेंगे तो आपको मतलब यू विल नॉट फाइंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हम कभी कभी हम लोग भी अक्सर होता है, मैंने तो कभी नहीं कहता, लेकिन जनरली लोग ये होता है, अरे यार चलो डिग्री लेना ले लो, फिर बहुत वक्त पड़ा, वक्त कहीं कुछ नहीं पड़ा, सीखोगे तो इसी वक्त अभी, समझे, क्योंकि नमूना भी नहीं है उस टाइम, तो बड़ा मुश्किल होता है क्यों। तो हमारे तो टीचर खैर इस टाइम में हमें कभी इंटरफेयर नहीं करते, मैं तो कोई भी उस टाइम तो 25-30 कंट्री के थे, तो मतलब मैं तो आफ्टरनून में खाना खा के निकल जाता था मैसेज में, जितने कोई भी फॉरनर नहीं छूटा है, बस इराकी ईरानी सब पे काम किया मैंने, सब पे सैम्पल पे स्टडी में। ठीक है, ओके, थैंक यू, जाइए आप लोग लंच लीजिए। हाँ 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 उसका कोई लिमिटेशन नहीं, डिपेंड करता आपका प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, समझे, डिपेंड करता है प्रॉब्लम। मैंने जैसे बताया ना, अभी एक थीसिस गाइड की मैंने राइचियसनेस पर, एक भी पूरी दुनिया में स्टडी नहीं थी, एक भी स्टडी नहीं थी दुनिया में, हम ऐसे ही एक्सप्लोर करते हैं, मतलब इंट्यूटिव नॉलेज अप्लाई करते हैं, फिर कहते हैं कि अब देखो ज़रा, विजडम में थे 2-3 स्केल थे, लेकिन कोई स्टडी नहीं थी। हाँ, तो वो उसी के ऊपर डिपेंड कर, पहले थी लोग 2-2 सौंपती थे, जो भी जिधर जो चाह रहा है मिल जा रहा है, लेकिन आजकल तो प्लेजरिज्म में, सिमिलरिटी इंडेक्स में फंस जाओगे, कहाँ कहाँ से मटेरियल निकाला, समझे। तो पहले तो ये था, लोग जितनी मोटी, जैसे लिटरेचर वाले लिख रहे हैं 300-300 400 पेज की लिख रहे हैं, वो पूरी पूरी किताबों से लिख डालते हैं सब, जैसे एक ऑथर ले लिया, उसी ऊपर पूरा लिख डाली जितनी भी उसकी थी, तो हम तो वो ने, तो हम लोग तो क्या 100 पेज की भी नहीं थी सर, ज़्यादातर 100 की भी नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से लाए बनाए, तो इसलिए इसमें वो नहीं। ठीक है, खाना। So, thank you so much for the wonderful talk. Friends, प्रोफेसर अकबर हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, और एज ए सोशल साइंटिस्ट दिस नॉलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर प्लानिंग टू परस्यू योर रिसर्च। आपके क्वेश्चन का जवाब है, यू विल सरप्राइज दैट वन ऑफ द पीएचडी वाज अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ Q2 1 पेज ओनली। इतने से पेज पे पीएचडी की थीसिस अवार्ड हुई है इन इंडिया। तो क्वालिटी के लिए आप सबसे ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, यू शुड नॉट बॉदर अबाउट द नंबर ऑफ पेजेस। और क्वालिटी के लिए देखिए, ये सारी कोशिश इसीलिए है कि हाउ टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च। Number of tools and applications are there, they can help you to develop and enhance the quality of the research. बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज है, और whenever you are planning to choose the test for research, then you must look into the characteristics
of the test as discussed by Professor Akbar Hussain Sahab. 5 characteristics are very important: the objectivity, reliability, validity, norms, and practicability. Number of times it has been seen we used to develop the items 100 items, 70 items, 130 items, and used to share the items with the experts to examine the content validity index. This is not the right approach. The judges and experts are not sitting there to judge your each and every item. You need to work at your end along with your supervisors. एक्सपर्ट्स से एक्सपर्ट्स वाला काम लीजिए. मेरे पास कितने आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से. आई यूज टू गाइड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ आइटम्स इन ए टेस्ट मस्ट बी इन और अराउंड 30. अब उसमें 5, 6, 7 आइटम्स और ज़्यादा आप कर लीजिए जिससे कि जज को मदद मिले टू एग्जामिन द रिलेवेंस एंड सिंप्लिसिटी and validity of each item before rating the item for the test. Very important knowledge, and for the coming sessions I will also try to consider one of the resource person to give you the hands-on practice. How to examine the reliability of a test on the basis of dummy data. Number of times it has been seen, सर अभी 5 मिनट का वक्त है सर. मैं number of times it has been seen कि the reliability is not in the acceptable range. When you are going to sit, अगर मौका मिला तो however I am not supposed to share all this knowledge, लेकिन मैं excited हूँ आपके साथ कुछ वक्त लगाने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, और मैं ज़रूर वक्त निकालूँगा कि without manipulating the data you will be able to enhance the reliability to large extent. Number of times ऐसा देखा है the supervisor used to push the student, what nonsense, it is 50, it is 0.60, go to the field and collect the data. No. On the basis of post-mortem of the items, without manipulating, within few minutes you will be able to enhance the reliability. ये बात मैं शेयर कर पाऊँगा. Then examine the factorial validity is very important. This will guide you the optimum numbers of the dimensions required in a test, and how to ensure the large number of variance into the variable under measurement. बहुत बार देखा गया है कि you have been able to enhance the reliability and validity of the test, but find it difficult to compute or develop the norms for the test. Norms. अगर मौका मिला मुझे, और इंशाल्लाह I will try to manage it, within 5 minutes you will be able to compute different types of norms. Standard scores, percentiles, stanine, stance, n number of norms you will be able to develop using SPSS within few minutes. तो इस वाली टॉक से रिलेटेड ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि, और इफ़ यू हैपेंस टू विजिट द रिसर्च किट और डिफरेंट social media platforms, we have uploaded large number of tests which has been developed by us, and you will surprise that I developed one of the tests, gratitude, with Professor Akbar Hussain Sahab. This is one of the tests which is enriching my research kit score or citation to the large extent. Gratitude. जब gratitude की बात आनी चाहिए तो आपके emotions, skin ऐसे होनी चाहिए कि gratitude. मेरी body देखिए, इस word को digest करिए, it is completely missing. If I go back to the Quran, there is a Surah Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, which favors of the God would you deny? देखिए, अपने से कंपेयर करिए, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है. There are millions or thousands जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है. इतने लिविंग बीइंग्स हैं, उसमें से आपको इंसान बनाया. So we must be thankful.
and this is completely missing in our society as well. शायद हर जगह ऐसा ही हो रहा है. If you happen to so, please try to introspect or examine your disposition. If you are not grateful, then something is missing. So gratitude का scale इतना अच्छा हम develop कर पाए हैं, and over the globe we are receiving the request, sir please allow us to use this scale in our research. So आज की टॉक से रिलेटेड ये सारी बात थी, और इस पर बहुत काम मैंने भी किया है सर के साथ, और इंशाल्लाह कंप्यूटेशनल जो पार्ट होगा वो ऐड ऑन करेंगे कमिंग डेज में. इसी इंथ्यूजियाज्म के साथ आप बराबर हमारे साथ जुड़े रहें, और वी विल ट्राई टू बी एट योर एक्सपेक्टेशंस. जो रिकॉर्डिंग है उसका एडिटिंग चल रही है, आई होप बाय द इवनिंग हम उसे अपलोड कर देंगे. वंडरफुल रिकॉर्डिंग, और पीपीटीज भी हम आज शाम तक रिकॉर्ड कर देंगे. आई होप वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शंस. आप लोगों का राय क्या है? एक्साइटमेंट है? Thank you so much. Thank you so much. So now you are welcome for the lunch. We are here to welcome you. Thank you so much.